Hello, good afternoon and welcome to this incredible session of learning called Sahyog and mental well-being for the students. Well, to watch this program live, you may tune in PM eVidya channel and of course NCERT official YouTube. I'm with you, Dharmendra Singh, and here we are going to talk about a crucial topic. Let me introduce the topic for today's discussion, which is substance abuse, a harmful effect on youth. Of course, we are living in a 21st century and these kind of disguised things will happening. So how we can stop all these things, what exactly mean all about, we will understand in this session throughout for half an hour. Related to this, if you have any query, you get back to us on our telephone number. You can see on your television screen, it's 8800-440-559. Apart from this, you may also send your questions and your suggestion on official email ID for Sahyog, which is sahyog.ncert@cit.nic.in. To talk about more on this, let me introduce our panelists. First of all, I would like to introduce Professor B.N. Panda, and he is joining us from RIE Bhubaneswar, NCERT. I welcome you, Mr. Panda. And along with him, I would like to introduce Ms. Ankita Chauhan. She is a mental health counselor. I welcome you, Ankita ji. Namaskar, sir. Thank you. Well, so let's start our session. And first of all, Professor Panda, we need to understand from you the meaning of substance abuse and what are the situations where actually influence the child to become a user of substance abuse. So thank you very much. So really it is a very burning topic at the present moment. Substance abuse is a pattern of drug generally used by the youth, and when they used it, they could not able to do the work normally. And substance abuse, generally it is known as a drug abuse, because any drugs which are consumed without any prescription, that is a substance abuse. So that is why the user consumes the substance in amount with methods which are harmful to themselves and others also. They do lot of bad things, and they commit lot of error, they commit lot of mistakes in the life, and they commit mistake for others also. So that is why when someone uses too much of illegal substances in a wrong way, without having any prescribed, that means provision, so we generally say that that is substance abuse. But generally, in the present context, in the 21st century, what you were saying, sometimes the young youth, they are, that means prone towards different type of drugs, which create problem for them. We can say that sometimes some of them, they, in the present context, we have seen taking too much of alcohol, sometimes cocaine, sometimes heroin, sometimes tobacco, sometimes opium, sometimes chorus. So these are all different varieties of substance abuse, which really create problem for the adolescent youth. So that what I mean to say is that there are a number of causes which affect the youth when they use substance. So we can say that there are some environmental factors, there may be psychological factors, maybe we can say there are biological factors, maybe personal factors, because beyond to that, there may be many other factors are there. So when we talk about biological factors, so we know that biology means the persons, that means the transmissions of gene from generation to generation. So genetic composition. Some of us, we have seen that father is alcoholism, and the family relatives, they are also under alcoholism. So they subsume to that type of activities, and they themselves involved in when they become the old, and when they become very youth. Periods of youth is a very dangerous periods in the part of the human life. The periods of youth must be controlled, but they become, because of certain situation, so they become disorder and under the influence of alcoholism, and because it may be due to genetic composition. And 100% it is not because of only genetic composition. We can say that is we can say that is environmental factors. So sometimes in the environment itself, the youths are not under the parental guidance. Sometimes they are always influenced by the peer, and street laws
and we can say that lot of cost they want to bear it in their life. So sometimes they could not able to do that. Even that some situations might have been created problem for them from their childhood. When they become adult, when they become youth stage, so some sorts of tension is there. So that may also influence directly or indirectly to say that is affecting their that means life. And in that sense, I can say that the poor social skills are happening. And when we talk about psychological factors, there may be low self-esteem. Sometimes very, very personally, some of the individuals or youth, they are not having very high self-esteem. They cannot consider themselves that they are in a high position. They consider that I am in a very wrong place, so poor self-esteem, sense of inferiority, loneliness, poor, we can say that abnormality sometimes, escape from the reality. Reality is different and they escape it from that. So that is why sometimes some of the internal psychological factors hidden, that within the brain something happened, and that is why youth, they go for different type of substance use. And in addition to that, personally also, sometimes conflict intrapersonal, sometimes झगड़ा भी होता है दूसरे के साथ में. So go for that means substance use. Internally, when somebody is unable to control his impulses, so the interpersonal relationship also having some sorts of affecting the substance use on the part of the youth. And we can say that family, and even sometimes persons are married, but because of certain diverse difficulties or home situation, or sometimes relationship issues, so depressed. So innumerable number of factors are there, and that may influence the youth to go towards that means a negative path, because the drug abuse. Because when somebody is under the control and influence of someone, so gradually, slowly, he or she becomes a drug abuse, and the illegal drugs are taken. And once illegally, without having any prescription, someone is taking something, whatever may be the that means level or point, so that will otherwise create a lot of problems to him or herself, himself, or the society, as well as the family where he or she is living. So we have seen that many persons, they are returning back to the home with a lot of that means uncomfortable situation. They are unable to maintain their own sanctity and their behavior at family's place. So that is why substance abuse has its own negative path on the path of the life, which creates a hazardous on the part of the individual. So what I mean to say is that we must be very careful to avoid the substance used by youth. So a lot of issues and concerns are there. So at this moment I must stop here, because this environmental or psychological or sociological or economical or biological, all these factors are essential contributing factor for helping the youth to become a drug addicts or substance users. So these are all hints must be known to the viewers, so that they can able to control themselves from that type of angles to become a successful man in this successful persons in the 21st century. So thank you very much for asking this particular situation. Thank you so much, Professor Panda, while explaining all these points so beautifully. And of course, we need to think too much about this, because it's a meditative issue for the universe, because lots of millions and millions adolescents are going to grab all these things day by day. So that is very important that we need to make some extraordinary steps to prevent this substance abuse. Now, I would like to move to Ankita ji. I hope you can hear me well. Yes, sir. Right. अभी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर प्रोफेसर पांडा ने हमें यहाँ पर बताए, सामाजिक एंगल को भी लेकर आए और अन्य जिम्मेदारियों को भी यहाँ पर हमने टटोल कर कहीं ना कहीं देखने की कोशिश की. इम्पैक्ट की बात करते हैं, क्योंकि ऑनगोइंग स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वहाँ तक भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पहुँच गई है और उसका बहुत ही गलत तरीके से दुरुपयोग भी हो रहा है. तो रोल ऑफ काउंसलर यहाँ पर निकल कर आता है कि किस तरीके से बच्चों को वो इन सारे मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखें, उनको उस तरीके की नॉलेज दें, और किस तरीके से सोसाइटी के जो यूथ हैं उनको समझा सकें, एक बैलेंस बना सके. तो रोल ऑफ काउंसलर इन दिस वे, हाउ वी कैन सी. सर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाएगा सब्सटेंस यूज़ का,
तो अभी आफ्टर कोविड-19 ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमको, और इम्पैक्ट इसका काफ़ी हार्मफुल होता है। बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं यूथ में। जो रिलेशनशिप्स होता है बिटवीन पेरेंट्स, बिटवीन पीयर्स, काफ़ी हद तक वो अफेक्टेड होता है। तो इसमें काउंसलर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता है। जैसे कि अगर एक बच्चा अगर सब्सटेंस अब्यूज़ से अगर पीड़ित, अगर वो सफ़र कर रहा है, तो उसमें काउंसलर का जो रोल होता है, जैसे कि जो काउंसलर्स होते हैं वो बहुत सारे थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, थेरेपीज के साथ साथ बहुत सारे हमारे सेशंस होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं। अगर जैसे कि आजकल स्कूल्स में भी बहुत जगह में मतलब जो काउंसलर्स हैं उन्हें मतलब अलाउ किया जा रहा है, दे आर टेकिंग दिस सेशंस, सो विच आर आई थिंक वेरी गुड फॉर द एंटायर एकेडमिक सेशंस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक हेल्प मिलता है दैट दे कैन कोऑपरेट विद देमसेल्फ, विद देयर प्रॉब्लम्स एज वेल एज। तो काउंसलर थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं बेसिकली। जैसे कि बच्चा जब सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से कम अक्रॉस होता है, चाहे वो पीयर प्रेशर हो, चाहे वो पेरेंटियल कन्फ्लिक्ट हो पेरेंट्स के बीच में, तो समहाउ वो कह नहीं पाता अपनी चीज़ों को जो वो बच्चा फेस कर रहा है। तो इसमें काउंसलर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ताकि वो बच्चे को एक प्रॉपरली उसका नरिशमेंट कर पाएँ। जो नेगेटिविटी उस बच्चे के अंदर है उसको पॉजिटिविटी में रिप्लेसमेंट हो, उसको एक प्रॉपर एजुकेशन दे सके, अवेयरनेस स्प्रेड हो कि नहीं मतलब सब्सटेंस अब्यूज़ एक कभी भी एक सही सोल्यूशन नहीं है। अगर आप स्ट्रेस से कम क्रॉस कर रहे हैं, या अगर आपको किसी भी तरीके का करियर में कोई कंफ्यूजन है, तो उसके लिए हम करियर ओरिएंटेशन भी प्रोवाइड करते हैं काउंसलर, सो दैट बच्चे को स्ट्रेस फील ना हो। तो ये काउंसलर का एक बहुत ही रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आई मस्ट से दैट। अंकिता जी, आपने बोला कि पेरेंट्स से बच्चे का शायद थोड़ा सा मनोविकार हुआ, उनके विचार नहीं मिल रहे और वो अपनी बात को शायद पेरेंट्स से नहीं कह पा रहा, और फिर जाकर उनका जो एक ग्रुप है दोस्तों का, जिसको सो कॉल्ड पीयर ग्रुप कहते हैं, वहाँ पर वो उन बातों को रखता है। अब निर्भर करता है कि वो नेगेटिव इफेक्ट लेके आ रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रहा है। तो फिर ये शिकायत तो पेरेंट्स की तरफ से हुई कि हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता, गुमसुम रहता है और पता नहीं क्या उसके मन में, हृदय में है। तो फिर ये तो एक तरफ कन्क्लेव हुआ ना कि बच्चे की बात को ही हम आगे की तरफ रखें, क्या पेरेंट्स की मनोदशा को हम नहीं समझ पा रहे, या दोनों ही तरफ ये बात है और दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे? कैसे देखेंगे इसको बहुत जल्दी से? सर जैसे कि आप देख सकते हैं एक जनरेशन गैप, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर है। तो ये देखा जाता है कि जैसे कि अभी के जो एजुकेशन हो रहे हैं, हमारे जो न्यू पॉलिसीज़ भी आए हैं, या इसके पहले के जो एजुकेशन सिस्टम थे, तो उनके बहुत चीज़ें काफ़ी हद तक बच्चा प्रेशराइज्ड रहता है। ट्यूशन्स 24/7 में काफ़ी कम समय मिलता है कि वो सेल्फ केयर या सेल्फ एनहेंसमेंट की तरफ ध्यान दे पाए। तो जब बच्चा प्रेशराइज होता है तो वो पॉजिटिविटी को सर्चिंग करता है विद द फ्रेंड्स, जहाँ पे उसको समहाउ फील होता है कि चलो ओके, आई एम फीलिंग पॉजिटिव समहाउ। ओके, तो उस समय पे अगर किसी भी टाइप का अगर पीयर के दोस्तों के तरफ से अगर उन्हें लाइक कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि नहीं, अगर हम ये चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो समहाउ वी आर फीलिंग गुड, तो कहीं ना कहीं बच्चे को लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, जो कि वो सोचते हैं कि इट्स अ गुड वे टू अपने आप को पॉजिटिव रखना, तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो उस साइड की तरफ जाते हैं, जो कि उनके लिए फर्दर एक हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात निकल कर वही आ रही कि आप दोनों ही आपसे अच्छी तरीके से बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मेंटल हेल्थ का इशू ज़रूर है, ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी हुई हैं, और 24/7 जैसे अंकिता जी आपने बताया कि उनको वक्त नहीं मिल पाता, तो वक्त आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करें, थोड़ा रचनात्मक कार्य करें, तो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, तो यहाँ पर वो पीयर प्रेशर थोड़ी तरीके से कम होगा और जहाँ पर आप अपनी बात को अच्छे तरीके से रख भी पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ऑन दिस। नाउ मूव्स टू प्रोफेसर पांडा. Do we have any treatment or any kind of therapies to reduce all these kind of substance abuse? Of course, if we are talking about the youth ones of our country. Generally, देखिए, there are large number of procedures and therapies or treatment mechanisms are available. If you have to go, suppose I want to treat a particular that means drug abused youth. So there are cognitive, that means we have to help that how to change the behavior, the thought patterns of this particular youth. What should I do in the educational institution or at home or in a particular point when the youth is having drug
totally drug abused. So we have to give immediately lot of assurance and changing the behavior that through cognitive mechanism by the help of our own influence, we can change the thought processes gradually, because within a day or two, it is not possible to change the drug abused thinking and philosophy. It takes a lot of timing. So that is why the cognitive therapy or behavioral therapy is a must. So that is one of the mechanisms. And another one is that medically, because we have to take to a, that means a youth who has drug abused, to take to the hospital. We have to admit them, because detoxification is essential. Unless we have to medically help them, so it is very difficult. Because in the medical, we can say that the individual, that we have to reduce the drug which he is taking, so we have to keep them for a longer period of timing. We have to provide a lot of, that means counseling. We have to give proper treatment. We have to provide nourishment. We have to provide psychological, that means support from the family side, from the friend side, from the doctor side, from the nurse side, so that gradually, because once a person is habituated with a particular type of, that means intoxication, so it takes some time. So that is why medically we have to provide them different type of, that means detoxification procedures. We have to follow that. That is one of the things we have to see that that is taken care of. That is one of the treatment we may provide. And we can say emotional. That means we have to power up rational thinking. We have to encourage self-emotion, inside out. You are having everything, because we have to persuade the drug abuse, you are having everything. You can realize, or you can change yourself. So that type of motivational things, that type, because external things are there. But what we should do, that rationally, that developing the thinking, changing the styles of thinking, changing the way of living in the society is a must. So that in that context, so I can say that is we have to give a behavioral theory. Not only that, that is motivational. In intrinsic as well as extrinsic motivation we have to provide from the intrinsic within himself or herself. How to give that intrinsic motivation? Some sorts of admitting that boys to play, changing the place, taking to a particular place where good people are living, giving the examples from the other sides, so that gradually he will be understanding the reality of the life. And external sides also play a very significant role. From the stimulus, from other side of the coin, in educational institution, they all are not drug abuse. So they are coming to an educational institution, teachers, other friends, all are there. So we have to motivate in such a manner so that outside force also have some impact on changing the drug abuse. Because sometimes prevention is better than the cure. So we must deal with the peer pressure. Because sometimes we have seen when the person is getting a job or at the stage of getting, let us go and have that enjoyment. Have drink, have these things. So that feeling itself is bad. So that is to be stopped from the beginning part. When the person is there, so peer pressure is to be reduced. Don't be influenced by your own peers. Don't be influenced by negative influence by your own peers. So that is why we have to say that life is totally different, and we have to remove the illness feelings, that means risk factor. Suppose a person is not interested to do good things in the that means workplace. So we have to provide support, change your patterns of thinking, and maintain a balanced life. Keep well yourself and think that. So gradually, if anybody is influenced under the intoxication, personally he has to take care of. Also group-wise, we can see 3-4 persons, and one person is drug abused, and another 3 or persons, counselor, maybe additional teacher, maybe family friends, maybe his best friends or his parents, all have to sit and give counseling sometimes. That is why both the treatment and we can even meditation also sometimes helps. Even exercise also sometimes. Yoga and exercise also play a significant role. So by the persuasions of different members of the society, slowly, gradually, we have to that means change and give a proper nourishment, so that
he will become a successful person in the society. If we are not doing that, so he will be rather, if we are leaving them, suppose we are not providing support from the family side, from the educational institution side, from the best peers, because all these students, some of the peers are very good to help to other peers. So all the systems should simultaneously work for reducing the drug abuse, and on the basis of slow and gradual treatment, we can change the lifestyles so that the person who is taking the drug, so he can realize that it is not a good way of living in the society. Because we have to see different examples, different countries example, different places example, different study report, even different case report of different persons, and how a person has been something or the other. If we are doing gradually, we will be reducing that effect, and he or she will become a balanced and successful person in the future. So these are all, so treatment and exercise and yoga and medications and all other things are essential component for reducing the drug abuse elements on the part of the behavior of a youth. So thank you very much. Right, absolutely. Professor Panda, you mentioned correctly here, apart from your essential work, you should get some time to do some exercise, do some mental exercise as well. Keep your, eating habit also good. So all those things will, give some kind of some sort of confidence to go ahead in your life. So you will be able to reduce some pressure from yourself. Right, so we have got only 4 minutes left now, so one more question I would like to add here. Well, अनिता जी, एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अंकिता जी माफ़ कीजिएगा, आपका नाम थोड़ा सा मैंने गलत प्रोनाउंस किया। जो कोपिंग या है मैकेनिज्म है, सहन करने का तंत्र है, उसको हम सब्सटेंस अब्यूज़ के संदर्भ में किस तरीके से समझ सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोफेसर पांडा ने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड की हैं, थोड़ा सा और इसको हम बेहतर ढंग से समझना चाहेंगे। सर, जैसे कि सर ने बहुत सारे थेरेपीज़ के बारे में बताया, जैसे कि REBT हो गया या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हो गया, तो थेरेपीज़ के साथ साथ बच्चे को खुद से बहुत सारे स्किल्स मतलब अपने अंदर में जनरेट करने पड़ते हैं। ये काउंसलर्स के द्वारा भी जनरेट होता है जब पहला इनिशियल स्टेज होता है सेशंस का। तो कोपिंग मैकेनिज्म ऐसा होता है कि मतलब इसमें बच्चों को खुद से वर्क ऑन करना पड़ता है। जैसे कि जब कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रहा है, कोई ऐसा फियरफुल सिचुएशन आ रहा है जिसमें उन्हें बहुत एंग्सियस लग रहा है, या फिर लाइफ में कुछ वैसा ब्रेकडाउन सिचुएशन है, तो उस समय पे रेदर गो फॉर एनी सब्सटेंस अब्यूज़, अगर वो अपने आप को रिलैक्स करेंगे। जैसे कि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं एक्चुअली रिलैक्सेशंस के। यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, ओके, आप मेडिटेशन कर सकते हैं twice a day, and you can also refer, आप अपने आप को मतलब किसी अपने जो फेवरेट एक्टिविटीज़ होते हैं जो आपको करना बहुत पसंद है, जैसे कि चाहे वो ड्राइंग हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क्स हो, डांस हो, सिंगिंग हो, अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है आप नॉवेल्स पढ़िए, बट विद अ पॉजिटिव वन, ओके। ऐसे बहुत सारे कोपिंग स्किल्स होते हैं। आप अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके बेसिकली अपने आप को आप रिलैक्स कर सकते हो, जिसमें कि मैंने सबसे पहला पॉइंट कहा मेडिटेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नॉट फॉर सब्सटेंस अब्यूज़, ये दूसरे जो मेंटल जो इश्यूज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे कोपिंग स्किल्स है। आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं अपने थॉट्स में। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रहा है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, लाइक सिचुएशंस आर नॉट कंट्रोल्ड, अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो सिचुएशन को, सो जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव समहाउ। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी आने मत दीजिए। काउंसलर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान सेटअप हो सकता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि एक प्रिवेंशन प्लान्स, जिसमें कि जो यूथ होता है वो काउंसलर के साथ मिलकर एक प्रिवेंशन प्लान सेटअप करता है। जब अगर उस बच्चे का अगर रिलैप्स हो रहा है समहाउ, अगर वो बच्चा एक कंटिन्यूस मतलब सही डायरेक्शन के बाद अगेन वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और अगर वो अल्कोहल अगेन कंज्यूम कर रहा है या किसी भी टाइप का ड्रग्स अगर वो अगेन कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन प्रिवेंशन प्लान्स होते हैं विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द यूथ। सो दीस आर सर्टेन। बिल्कुल अंकिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने सारे विचारों को यहाँ पर रखने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था और काश इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकते, लेकिन यस काफ़ी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। खुद के ऊपर आपको यकीन रखना होगा, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर रहना पड़ेगा, और ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से इस फियर को आप हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन जब आप एक बार आदत में इसको ले आएंगे तो फिर एवरीथिंग विल गोना बी ओके वेरी सून। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही एक्सपर्ट का। थैंक यू सो मच both the expert for joining with us, and thank you so much all the viewers for watching this program. Next is Nishta 3.0 after a short break. Keep watching PME Vidya channel. Allow me to go now. Namaskar.